गुड मॉर्निंग देवाशीष भाई, गुड मॉर्निंग देवाशीष नायक जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, काइंडली जॉइन। चलन तो स्टार्ट करिवा। सो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आमे प्रिपरेशन करूछु फॉर ओएसएससी जेई एग्जामिनेशन 2023 से 24 रो एग्जामिनेशन सेबार अछि। ओके जाय अप्रोक्सीमेटली दुईटा जाको मिसै करी 2000 वैकेंसीज अछि। फॉर्म फिलअप ऑलरेडी सरी जाइछि। तो जो भाई भौनी माने फॉर्म पकई छंती आ जो भाई भौनी माने प्रिपरेशंस करू छंती, वेलकम। सब्सक्राइब टू कांसेप्ट डिकोडर चैनल, कांसेप्ट डिकोडर टेक्निकल चैनल। एबे हमें आरसीसी एमसीक्यू सेशंस करू छु। देखंतु जो भाई भौनी मान को कंप्लीट क्लासेस दरकार, यू कैन डाउनलोड माय एंड्रॉइड एप्लीकेशन कांसेप्ट डिकोडर। एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करला परे सेठी क्लासेस थी ओएसएससी रो आपण जॉइन करि परिबे। हमारा जो जनरल फी अच्छी दैट इज योर 3000 रुपीस, बट फॉर दिवाली दिस दिवाली 50% ऑफर मु अप्लाई करी। सो कूपन कोड इज OSSCJE 50। जॉइन करि परिबे, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज यू विल गेट एवरीथिंग। ओके सो लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जय जगन्नाथ भाई भौनी माने चलन तो स्टार्ट करिवा। When an RCC beam is subjected to twisting movement, okay, when an RCC beam is subjected to twisting movement, torsion reinforcement is provided as what? Torsion reinforcement जो हमें provide करू छु, okay, केमिति provide करू छु? Torsion reinforcement is provided as what? Good morning रेणु जी, केमिति अछंती आपण माने समस्ते? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। के किसी खराब भाबे नाही भाई, आजिकाली सेल्फ मार्केटिंग करिया पड़ू छे। ओके न करले हबो नाही, करिया कोई पड़ियो। सो टिके क्लास आरंभ हो टिके बतई दउ छी। ऑफर टा गुडे लागी छी, हमर भी दिवाली सेलिब्रेशन हे जियो। परंतु when an RCC beam is subjected to twisting movement, torsional reinforcement is provided as केमिति? Very good. As a shear and flexural reinforcement. So option C will be correct. As a shear and flexural reinforcement. ठीक अछि? In a RCC beam, side face reinforcement is provided if depth of wave exceed. अच्छा ये क्वेश्चन तो ही थिला ही कहि दियंतु। रिवीजन भी गोटे टाइप रे हे चलथबो, कहि दियंतु। जल्दी जल्दी आंसर करंतु। वेरी सिंपल। बहुत बढ़िया। 750 mm। ओके, इक्विवेलेंट shear shall be calculated for shear and torsion by using the formula। आइरु को फार्मूला को यूज करी हमें इक्विवेलेंट shear को कैलकुलेट करिवा। ये क्वेश्चन भी हे जाइथिला, जस्ट गोटे थोड़ा फार्मूला रो रिवीजन हे जाओ बोली। आइर को फार्मूला को यूज करी हमें इक्विवेलेंट shear को कैलकुलेट करिया फॉर टॉर्सन। कोंतु लाइक कर देवे। आकाश भाई हाउ आर यू? विच फार्मूला? अरे डी हेबो ना सी हेबो? आई रे सी हेबो बोधे। देखो नॉमिनल shear प्लस 1.6 TU, ओके, फैक्टर टॉर्सनल मूवमेंट डिवाइडेड बाय बी। सी हेबो ना? डी कौन पे कहते भाई भौनी माने? इट विल बी सी। सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट, at the limit state of collapse
an RCC beam is subjected to shear force of 20 kilonewton and torque of 9 kilonewton meter. The beam is 300 mm wide and have 425 mm gross depth with an effective cover of 25 mm. The equivalent normal shear stress is, calculate karanto. Equivalent normal shear stress is numerical question. आराम रे बसी करी कैलकुलेट करंतु, कैलकुलेट करी आंसर कहंतु गाइस, कैलकुलेट इट, सॉल्व करंतु. कौन पचारछि? इक्विवेलेंट नॉर्मल शियर स्ट्रेस कथा पचारछि. इफेक्टिव कवर भी दिया हिछि देखंतु. तो सबुठु फर्स्ट तो आपन को इक्विवेलेंट शियर कैलकुलेट करिया पड़िबो. इक्विवेलेंट शियर सॉरी इक्विवेलेंट शियर को कैलकुलेट करिला परे तापर इक्विवेलेंट शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करिया पड़िबो. केते आसुची आंसर लाइक करि देबे भाई भौनी माने. बहुत इंपोर्टेंट एमसीक्यू सेशंस, ये टाइप क्वेश्चंस आपन को डिफरेंट एग्जामिनेशंस रे आसी पारे. ये सब डिस्कशंस मु क्लासेस रे करी सारी छी जो हमर थ्योरेटिकल क्लास थिला. आंसर एनीवन? देखंतु सॉल्व करूची. सबुठु फर्स्ट इक्विवेलेंट शियर. एबे हमें फार्मूला देखिथिलु. Nominal shear VU plus 1.6 into TU divided by B. So ये फॉर्मूला यूज करिवा जदी. So VU कहते 20 किलोन्यूटन means 20 into 10 to the power 3 plus 1.6 into 9 किलोन्यूटन मीटर अछि न्यूटन एमएम रे काढिवा. 9 into 10 to the power 6 न्यूटन एमएम divided by B कहते 300. So ये वैल्यू कहते आसीओ. This particular value will be coming as 6800 न्यूटन. 6800 न्यूटन, 68,000 न्यूटन एतकी आसीओ. ओके 6800 न्यूटन. तो this is your equivalent shear force. Now equivalent shear stress tau VE कहते. This particular shear force 68,000 Newton divided by cross section. Overall cross section ना कौन consider करी? What I have to consider? Exam रो date तो जना पड़ी नहीं. अरे बहुत problem ही जाइए. 300 into 400. ऐठी देखो तो 400 हमें यूज करिवा ना. 400 because टेंशन रिइंफोर्समेंट तळे जो कंक्रीट अछि इट इज एज्यूम टू बी क्रैक्ड. ठीक अछि. जनरली एमते न्यूट्रल एक्सिस तळे जो कंक्रीट अछि इट इज एज्यूम टू बी क्रैक्ड, बट बिलो टेंशन रिइंफोर्समेंट जो कंक्रीट अछि ओके सेटा तो पूरा ही बेकार हो जायछि, क्रैक हो जायछि आ तार किछि भी शियर रेजिस्टेंस नथिबो. हेंस द फार्मूला इज टू कैलकुलेटिंग द शियर स्ट्रेस tau VE divided by B into effective depth. Yes or not? एमिति. So what will be the result? The result will be 0.5666 Newton per mm square. माने 0.5666 megapascal. Okay? एडा होची सॉल्यूशन. ये टाइप आपण सॉल्व करिवे. So what will be answer? 0.5666 megapascal. D will be answer. देखो तो भाई एग्जाम रे एग्जैक्टली को क्वेश्चन आसीओ एडा तो मु जाननी. ओके बट आई एम टेलिंग यू लास्ट एग्जामिनेशंस रे ओके बुक तो जो बुक जनरल कॉमन बुक अवेलेबल अछि से बोई गुडा को रिवीजन करिवे. गुप्ता ही गला किंबा यूथ रो बुक ही गला ये सब
प्राय सब स्टूडेंट पाखरे रुहे तो ये सब बुक्स रो रिवीजन करंतु प्रैक्टिस करंतु बट द बेस्ट थिंग जाइरु कि आउ किछि टेंशन नाही सब्जेक्ट रो भल से रिवीजन करंतु तापरे एमिति क्वेश्चंस गुडा को प्रैक्टिस करि नियंतु दैट विल मेक योर कांसेप्ट कंप्लीटली क्लियर दिस इज 100% ट्रू ओके से ये जिनसोटा अपन कांसेप्ट पूरा क्लियर करियो कोन पे बोले लास्ट टाइम एग्जामिनेशंस रो जो क्वेश्चंस गुडा को थिला एमती नाही कि सब क्वेश्चन एकदम हल्का फल्का अछि किछि किछि क्वेश्चंस तो एमिति भी थिला हां डेफिनेटली से सब क्वेश्चंस गुडा को आप पूर्वरु बहुत डिफरेंट एग्जामिनेशंस रे अपीयर हेइथिला बट जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस थिला जदी लेट्स सपोज कोई स्टूडेंट से कोन सब एमसीक्यू प्रैक्टिस करि छी करि नथियो मे बी ही पर से क्वेश्चन देखि पारि नथियो से तो ता पाए तो सिडा एज ए कंसेप्चुअल एज ए लॉजिकल एज ए पूरा हेवी क्वेश्चन लागि थांता यस और नॉट बट जदी आपण ये जगह रे सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करि थांते देन डेफिनेटली ब्रेन एफर्ट लगे करी से रियल टाइम एग्जामिनेशंस रे से क्वेश्चंस को आपण सॉल्व करि परिबे गेटिंग द पॉइंट सो स्पेसिफिकली मु तो किछि बोही रेकमेंड करि परिबेनी मु किछि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे देबी बाकी जदी बोही रो प्रैक्टिस करिवे तो गुप्ता और यूथ कंपटीशंस को फॉलो करंतु बहुत गुडा को क्वेश्चंस अछि पूरा प्रैक्टिस हे जियो भल से ओके solve this particular question estimation रवि करिया भाई estimation करिया ओके estimation करिया अब ये आरसीसी उठे छी इटा सॉरी जाओ फर्स्ट आरसीसी इटा बे सॉरी जाओ आरसीसी एमसीक्यू मु एंडिंग जाई एकदम करे देबी 1000 1200 1500 2000 जितकी क्वेश्चन जीवो एंडिंग जाई मु करेगी तापरे बीएमसी कंप्लीट करिया बीएमसी तापरे बीएमसी कंप्लीट करिया आ दुईटा चैप्टर अछि ताइरे तापरे प्लेट गडर गोटे पढेबी मु स्टील रो प्लेट गडर बतैनी प्लेट गडर एंड बीम आकु मु प्रैक्टिस करेबी प्लेट गडर एंड बीम स्टील रो प्लेट गडर एंड बीम पढैला परे आरसीसी जेमते एमसीक्यू हे गेला स्टील एमसीक्यू कर दवा गोट थरो स्टील एमसीक्यू सेशन कर दवा तो येडा कंप्लीट हे जिवो तापरे आई विल ट्राई देखंतु ये एतकी फर्स्ट हो एतकी हमर एबे प्राइम टारगेट ओके एतकी फर्स्ट हे जाओ एडा हे गेला परे नेक्स्ट न्यू सब्जेक्ट उठेबा मु पोलिंग करेबी कोन न्यू सब्जेक्ट पढिबे सॉइल पढिबे ना सोम सॉइल सोम तो एमती मु पढे आपन को क्लास देई को रखी छी गेटिंग द पॉइंट जदी ओडिया लैंग्वेज रे पढियार अछि तो आउ थरे स्टार्ट कर देबी सॉइल मैकेनिक्स और सोम ये सब ये बहुत टाइम लगी होता है रे बट हेले भी इट डिपेंड ऑन यू जो भाई माने बैच रे जॉइन करिसंती अपन जेमती कोइबे सेमती मु काम करिवे अपन पाई ओके बिकॉज़ यू हैव हायर्ड मी बट फर्स्ट मो हिसाब रे एतिकी सरी जाओ गोटे कंप्लीटनेस थिबो ओके आ ये सब क्लासेस गुडा को देखंतु एबे जो लाइव देखुसंती बहुत बढ़िया कोन बोले ये सब क्लासेस गुडा को मु कोन करबी डिलीट कर देबी चैनल रो डिलीट करला परे मु डायरेक्टली अपलोड करबी ऐप रे ओके चैनल रे नथियो लाइव रे ही देखि परिबे तो देखि नियंतु इट विल नॉट रिमेन ऑन द चैनल करंतु in the design of beam for torsion the spacing of stirrup placed perpendicular to the axis of the member shall not exceed spacing of stirrup B have answer B ये तीनटा जिंस गुडा को हमें कंसीडर करछु गुरु ओके we consider everything every parameter clear we consider every parameter x1 plus y1 divided by 4 300 raw minimum so D must be the answer अबे ये क्रॉस सेक्शन विषय में ऑलरेडी आपन को बतई थिली यस और नॉट ये क्रॉस सेक्शन विषय में ऑलरेडी आपन को बतई थिली व्हाट इज द क्रॉस सेक्शन देखंतु द क्रॉस सेक्शन इज let's suppose this is the cross section
सो एठी आपण प्रोवाइड करिसंती लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट लेट्स सपोज दिस इज योर अच्छा को टिक के भीतर कर दवा चारिटा कॉर्नर रे हमें बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट इन फॉर डिजाइन फॉर टॉर्सन कॉर्नर रे प्रोवाइड करिवा चारिटा कॉर्नर रे चारिटा लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट आपको टिक के ऊपर कर दउची भाई लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट आपण प्रोवाइड करिसंती तापरे कोन शियर स्टीरअप आपण प्रोवाइड करिसंती एठी stirrups okay you have provided stirrups let's suppose this is your stirrup एमिति हाँ पूजा अच्छा बोल रहा हूँ बाबू क्लास में हूँ फोन करता हूँ क्लास के बाद ठीक है घर में नेटवर्क एक्चुअली क्या आजकल नेटवर्क नहीं आता है ना तो घर में थोड़ा नहीं लगता है ना मैं क्लास के बाद तुमको अच्छा घर में वही छोटी का फोन पे करो फोन ठीक मैं फोन करता हूँ क्लास के बाद ठीक सॉरी गाइस बहुणी सिस्टर फोन करिथिला ओके सो देखो तो x1 कौन ये जो स्टीरअप अच्छी आर सेंटर ये पटे स्टीरअप रो सेंटर ये डिस्टेंस दिस इज योर x1 वर्टिकली आपण देखिए तो दिस इज योर y1 माने स्टीरअप्स रो सेंटर यस और नॉट इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन x1 y1 तो x1 तापर x1 plus y1 by 4 300 आरो मिनिमम सो d must be answer this is your spacing clear next torsion resisting capacity of a given reinforced concrete section good morning Manas Mini जी good morning आंसर करंतु फोन को साइलेंट करी दउची एनीवन बिल्कुल बहुत बढ़िया इट विल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन स्टीरअप एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टील ठीक अच्छी डी विल बी आंसर ये क्वेश्चन करो तो ए रेक्टेंगुलर बीम विथ विड्थ with b equal to 200 mm and effective depth d effective depth dij 300 mm is subjected to limit state of shear 80 kilonewton ठीक अछि limit state of shear directly dij factored shear means 80 kilonewton and torsional moment of 6 kilonewton meter the equivalent value of shear एटा तो संग संग आंसर करि दियंतु बहुत गुडा को क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाई छै बीबीएस शिखिवार अच्छे बीबीएस हाँ बार बेंडिंग शेड्यूल कार करेबी बार बेंडिंग शेड्यूल हाउ ठीक अछि ओके मु ठीक अछि मु देखुछि मो पाखर अछि ड्राइंग्स गुडा को निजे मु करिथिली प्रीकास्ट डिजाइन्स ठीक अछि प्रीकास्ट बॉक्स रो डिजाइन गुडा को मु करिथिली ताई रे जो बार्स गुडा को थिला ना ओके से ड्राइंग देखि करी गोटे बीबीएस शिखे देबी शिखि जिवे आपण ठीक अछि आई विल एक्सप्लेन यू क्लियर नाले मु देखुची मोर ईमेल रे सर्च करछि जति मोर मो पाखे फॉर्मेट थिबो एक्सेल शीट ता से एक्सेल शीट मु शेयर कर देबी ओके केते हिजो एडा सेम फार्मूला मन रखिबे फार्मूला बहुत थोड़ा रिपीट हो गला गुड मॉर्निंग सुशील केते ही गला केते आसी जाउची गुरु केते आसी जाउची v इक्विवेलेंट आउथरे vu plus 1.6 tu upon b सेम फार्मूला केते आसी जाउची
it will be coming as 128 kilonewton. Solve करो A. Okay, A will be answer. चलंतु आंसर करंतु स्लैब रो क्वेश्चंस गुडा कहबे बहुत बढ़िया डिजाइन ऑफ टू वे स्लैब टू वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब on edges and having no provision to prevent the corner from lifting is made by केमती आमे डिजाइन करू छु मार्कस फार्मूला स्लैब रे बहुत डिटेल रे बतै छी ये सब ऑलरेडी मु केमती डिजाइन करिया गुरु by using which particular formula को फॉर्मूला अप्लाई करिवा एठी गुड मॉर्निंग आंसर करंतु भाई आंसर करंतु कमेंट आसुनाई एनीवन हेलो अरे मोर लैपटॉप रे कौन गुटे वॉइस आसीबा स्टार्ट हो जाइछि जस्ट अ मिनट टिके मु करेक्शन कर दउछि टू 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 आसुछि देखंतु अरे design of two-way slab simply supported on edges and having no provision to prevent corners from lifting is made by आप जो फॉर्मूला अच्छी दिस इज योर मार्कस फॉर्मूला जस्ट अ मिनट सॉरी 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 मार्कस फॉर्मूला रे आमे जतबे टॉर्सनल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करिवा ना एठी आमे टॉर्सनल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करूनु वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी टॉर्सनल रिइंफोर्समेंट ठीक अछि जतबे आमे टॉर्सनल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करिवा टॉर्सनल रिइंफोर्समेंट सेतेबेले आमे यूज करिया मार्कस मेथड बट नाउ वी हैव टू यूज व्हाट Runkein-Grashof formula. This is the formula. So मन रखिथिबे बट एडा केमती मन रखिबे जते आपण से लॉजिक पूरा थ्योरी पढी नांती से ये सब डेटा खाली मन रखले हेबो नै आरो पूरा मेथड अछि पूरा सीरीज रे अछि कि ये टाइप स्लैब तो आपे ये कांसेप्ट को यूज करा जीवो तो आपण मन रखिथिबे एमती कि देखंतु नो प्रोविजन टू प्रिवेंट द कॉर्नर्स फ्रॉम लिफ्टिंग माने कॉर्नर लिफ्ट हे परिबो माने टॉर्सनल रिइंफोर्समेंट दिया जाए तो Runkein-Grashof फार्मूला ठीक अछि आ जदी टॉर्सनल रिइंफोर्समेंट दिया जाय देन
मार्कस फार्मूला मींस कॉर्नर्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू लिफ्टिंग ठीक अछि देन मार्कस फार्मूला इफ टॉर्सनल रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड क्लियर एमिति तो आंसर है जो ये क्वेश्चन रो बी distribution reinforcement in a simply supported slab is provided to distribute what load shrinkage stress temperature stress all of the above none of this option किछि प्रॉब्लम नहीं गुरु ठीक अछि all of the above option are correct okay it will distribute all of the above okay आर स्पेसिंग गुडा को मन रख दिबे आको क्वेश्चन नंबर 1 भावंतु आको क्वेश्चन नंबर 2 भावंतु in a two-way slab corner steel is provided to counter what in a two-way slab corner steel is provided to counter what the purpose of RCC slab spanning up to 4.5 the props sorry the prop purpose nahi props ମୁଁ भी भूल भाल पढ़ी दउची props of RCC slab spanning up to 4.5 meters shall be removed after minimum dash days up to 4.5 मीटर को आई छी देखंतु तो अपलिफ्ट ऑफ कॉर्नर एजेस ठीक अछि uplift of corner edges say by corner steel that is torsional reinforcement or Marcus method ये दुईटा कीवर्ड अटैच करी मन रखिबे आर आंसर कोन हेबो स्पैनिंग अप टू 4.5 मीटर 7 days केते थरा मु ये डेटा अपन को देई छी ऑलरेडी तो C and B next आपको क्वेश्चन नंबर 1 भावंतु आपको क्वेश्चन नंबर 2 भावंतु this slab without any beam is called as जाय रे बीम आपण किछि भी बीम प्रोवाइड करिवे नाही for two way RC slab the deflection is guided by very simple एमती स्लैब जाय रे हमें किछि बीम प्रोवाइड करिवानी आजि कोन ना मोर टिके मींस बहुत काम जाको हे गेला सेटा पर टिके बॉडी पेन अछि दिस स्लैब विदाउट एनी से पर टिके एक्टिवनेस टिके कम लागुथबो राति लेट रे सोइली This slab without any beam is called as empty slab जाय रे आपण बीम बिल्कुल प्रोवाइड करू नांती फ्लैट स्लैब for two way RC slab the deflection is guided by देखंतु significant deflection will be along what significant deflection will be along shorter span only okay shorter span only ये केसेस रे देखंतु क्वेश्चन नंबर 2 रो देखंतु एटी कंफ्यूजन हेबो केबे केबे मु ये कंफ्यूजन क्लियर कर दोची जदि आपन को डिफ्लेक्शन कथा पचारिबो डेफिनेटली इट इज कंपेरेबल इन बोथ डायरेक्शन बट जो मेन अछि मेन सिग्निफिकेंट डिफ्लेक्शन विल बी अलोंग शॉर्टर स्पैन ओनली अब जो मेन रिइंफोर्समेंट गुडा को प्रोवाइड करिवे वी आर गोइंग टू प्रोवाइड मेन रिइंफोर्समेंट इन बोथ डायरेक्शन शॉर्टर एंड लॉन्ग ठीक अछि तो ये दुईटा अलग अलग टाइप रो क्वेश्चन आसी पारे सो मन रखि देबे आर आंसर ए हेबो एबे डिफ्लेक्शन कथा पचारिवे तो शॉर्टर को ही
सब वे टिक लगे चालू थिबे आउ जदि रिइंफोर्समेंट कथा पचारिबे तो टू वे रे तो इन बोथ डायरेक्शन जबकि वन वे रे शॉर्टर डायरेक्शन रे आमे मेन रिइंफोर्समेंट तार परपेंडिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील एठी समिति नाही इन बोथ डायरेक्शन वी प्रोवाइड मेन रिइंफोर्समेंट the maximum permissible value of ratio of span to depth of two-way simply supported RCC slab is of two-way simply supported RCC slab is किते ये वैल्यू मु ऑलरेडी कही थी क्लास रे आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस वैल्यू बहुत बढ़िया 35 एडा होची वन वे पाई आ 40 होची कंटीन्यूअस स्लैब पाई मन रख दिबे नेक्स्ट सी विल बी आंसर करंतु मन अछि कि एज पर IS 456 moment coefficients as per IS 456 2000 maximum bending moment at support next to end support of a three span बहुत बढ़िया से मु ये कॉन्सेप्ट पूरा एक्सप्लेन करी आपन को ये कोएफिशिएंट्स गुडा को एक्सप्लेन करी मु बहुत बढ़िया से आपन को बतई थिले कि केमिति हम डिजाइन मोमेंट कैलकुलेट करिवा maximum bending moment at a support next to end support of a three span continuous beam having each span L subjected to UDL okay in the form of dead load WD and live load WL is given by what will be answer shear force and bending moment coefficients तो देखो तो ये सब टॉपिक ऊपर भी क्वेश्चन आसुची कौन है गुरु आंसर एनीवन तो मन रखिए ओके ए विल बी आंसर हियर ठीक अच्छी तो ये टॉपिक को रिवीजन करिवे shear force and bending moment coefficients sorry A will be answer next a cast iron beam कहली ना आज मोर टिके लगुच कि ज्वर धरी दब संध्या जाए ना काली काली तो हो जाऊँ एमती भाई कौन करवा काम 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 स्ट्रेस स्ट्रेस ए कास्ट आयरन बीम इज ए T section as shown. It is supported and carrying a uniformly distributed load. Which of the following is the correct bending stress distribution diagram if the element is stressed perfectly within plastic limit? एठी देखो तो बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कथा पचारछि अरे ये इंटरनेट कौन पर डिस्कनेक्ट हो जाउछ इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाइतला कोन के अरे एटा तो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है वो दिस इज नॉट द आंसर पचार जेती बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम
So bending stress distribution is linear over the cross section. Yes or not? It will be linear over the cross section. So bending stress distribution कौन है वो group? Option C. This will be your bending stress distribution. Okay. ठीक अच्छे. C will be answer. It is shear stress fine. Next. What is the change in layer length? पढ़ंतु भल से पढ़ंतु. What is the change in layer length of beam at level of neutral axis if beam bends due to UDL? जदि beam रो bending हैला due to UDL. Okay. Then what is the change in layer length at the level of neutral axis? No change in length, depend on stress developed at that level, depend on shear stress, depend on intensity of load. At the level of neutral axis रे किसी भी stresses न था. So जदि stresses नहीं माने ना तो compression अच्छी ना तो tension अच्छी. तो compression नहीं, tension नहीं, तो contraction है वो नहीं कि elongation है वो नहीं. Okay, there will be no contraction, there will be no elongation. So the right answer must be no change in length at the level of neutral axis. पचारची ना. Neutral axis माने कौन? What do you mean by neutral axis? माने जेमती की बेंडिंग हैला. लेट्स सपोज गोटे मेंबर अछि. दिस इज ए मेंबर. आरो बेंडिंग हैला, आरो बेंडिंग हैला एमिति. सो टॉप फाइबर रे कंप्रेशन, बॉटम फाइबर रे टेंशन. जो न्यूट्रल फाइबर अछि, दैट इज एट द लेवल ऑफ न्यूट्रल एक्सिस. ये मेंबर रो जो लेंथ ओरिजिनली एल थिला एबे भी आर लेंथ एल आकार रहिबो. Clear? ABR length L ही रहिबो. So there will be no change in length at neutral fiber or neutral axis. Okay? Option A will be correct. Basic question. Clear? Next. ये question करंतु. A T-beam roof section has following particulars. Thickness of slab equal to 100 mm. Width of rib equal to 300 mm. Depth of beam equal to 500 mm. Center to center distance of beam is 3 meter. Effective span of beam is 6 meter. ठीक अच्छी. Distance between point of contraflexure is 3.6 meter. माने इटा L0 value दिया है ची आपन को L0. The effective width of flange of the beam is T-beam टा. तो आरो effective width कहते हैं वो. Effective width of flange of T-beam. Calculate करन तो guys. Anyone? Effective width of flange formula मन नहीं की. फॉर्मूला मन नहीं की.
दिस इज योर बीम स्लैब सिस्टम तो एठी बीम स्लैब सिस्टम गोटे दिया है एटा ओके एमिति तो लेट्स सपोज दिस इज योर विड्थ ऑफ वेब तापर ये जो स्पेसिंग अच्छे आंको मझे ये स्पेसिंग केते दिस पर्टिकुलर स्पेसिंग इज योर b1 लेट्स ओके एमिति भाबंतु लेट्स सपोज अगेन दिस इज योर विड्थ ऑफ वेब क्लियर दिस इज अगेन योर विड्थ ऑफ वेब दिस इज योर डेप्थ ऑफ फ्लैंज दिस इज योर डेप्थ ऑफ फ्लैंज ठीक अच्छे तो लेट्स सपोज को गोटे टी सेक्शन धरि नियंतु लेट्स सपोज दिस वन this particular T section एमिति तो this is your effective width of let's suppose this is your width of flange BF तो B effective T beam पाई कौन minimum of by 6 plus width of web plus 6 times depth of flange or B1 by 2 plus width of web plus b2 by 2 एमिति माने ओके प्लस b2 by 2 लाइक दिस b1 b2 माने कोन जेमति कि लेट्स अच्छा आकु b2 भाबे नियंतु तो एटा b1 हे गेला एमिति सपोर्ट टू सपोर्ट डिस्टेंस दिस इज योर b1 दिस इज योर b2 लाइक दिस ये टाइप हमें कैलकुलेट करू फॉर बीम स्लैब सिस्टम so apply this particular formula ida hoche t beam pai ebe calculate karantu kete asuchi anyone ये सब फॉर्मूला मन रखिले सिना आंसर आसीबो मन रखियार अछि भाई भौनी माने फॉर्मूला चलंतु गुरु मु सॉल्व कर दउ छी देखंतु फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करिवा फर्स्ट फॉर्मूला देखंतु बी इफेक्टिव L naught by 6 L naught कहते 3.6 मीटर means 3600 divided by 6 L naught by 6 plus कौन width of web means 300 mm plus 6 into depth of flange तो depth of flange कहते 100 mm सेकेंड फॉर्मूला ठीक अच्छे देखो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन बीम केते दिया है सेम फिक्स वैल्यू तो 3000 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3000 डिवाइडेड बाय 2 ओके प्लस विड्थ ऑफ वेब इटा ना तो विड्थ ऑफ वेब इज 300 mm तो ये दुईटा रो मिनिमम जस्ट एतकी करिवार छिला मिनिमम ऑफ अबव 2 व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू कमिंग this will be your 1500 mm इडा केते 1500 3300 तो मिनिमम आंसर विल बी C 1500 mm C is the answer वेरी गुड बहुत बढ़िया तो फॉर्मूला मन रखिले सिना कार कार फॉर्मूला मन रखिबार अछि देखंतु चारिटा का फॉर्मूला अछि माने चारि पांचटा फॉर्मूला जो इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट गोटसर मु कहि दउची रिवीजन करिवे सबटु फर्स्ट इफेक्टिव लेंथ वैल्यूज गुडा इफेक्टिव लेंथ
ये डेटा बहुत इंपोर्टेंट इफेक्टिव लेंथ L/D रेशियो गुडा जोठी भी देखिबे सेठी L/D रेशियो गुडा जो बहुत इंपोर्टेंट डेटा गुडा कहूछ तापरे टाउसी मैक्स वाला टेबल टाउसी मैक्स टेबल ठीक अछि टाउसी रो टेबल इडा भी टाउसी मैक्स रो टेबल टाउसी वाला टेबल तापरे ड्यूरेबिलिटी वाला टेबल ड्यूरेबिलिटी टेबल ओके जाय रे ये क्लियर कवर सीमेंट कंटेंट ठीक अछि प्लस एक्सपोजर कंडीशंस गुडा को से टेबल टा दैट पर्टिकुलर माने जो मिनिमम बेसिक जिंस मन रखिबे तापरे फोर्थ एबे जेंति एठी हमें देखलु फ्लैंज सेक्शन रे आइसोलेटेड एंड बीम स्लैब सिस्टम आइसोलेटेड एंड बीम स्लैब सिस्टम रे टी बीम थिबो टी एंड एल सेक्शन रो इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज बी इफेक्टिव आर फॉर्मूला गुडा को बी इफेक्टिव ओके तापरे आउरी कोन फिफ्थ पॉइंट सब जगह रे जूठी भी देखिबे स्पेसिंग्स ठीक अछि स्पेसिंग्स माने ये सब जिनस गुडा को एतकी तो 5-6टा कैटेगरी रे पॉइंट्स गुडा अछि जो सब डेटा आपन को मन रखिया पड़ियो इन आरसीसी यस और नॉट स्पेसिंग जेमती कंप्रेशन मेंबर रे किंबा आपन शियर रे किंबा टॉर्सन रे किंबा बीम रे यस और नॉट तो दीज आर सम इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट डेटा इन आरसीसी ये सब जिनस केबे भी पासेरवे नाही बारंबार रिवीजन करंतो आ ये सब जिनस मन रखियार अछि ओके तो आर बेस्ट आईडिया कोन प्रिपेयर ए शॉर्ट नोट्स बनी नियंत ओके आ ताकू बारंबार घुसी चलंत ठीक अछि फार्मूला गुडा को खाली फार्मूला रो शॉर्ट नोट्स the side face reinforcement is required in T beam will be very simple बहुत easy the side face reinforcement केते जो आंसर बहुत बढ़िया 0.1% ऑफ वेव एरिया गोटे आंसर आसी जो मु प्रोसीड करिवि द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ टी बीम रो न्यूट्रल एक्सिस the neutral axis of T-beam always pass through the flange area, always passes through the rib area, mane web area, rib mane web area, always at the junction of the rib and the flange, can exist anywhere in the section of the beam. D can exist anywhere in the section of beam. T-beam kotha pocharchi. Okay, it is not necessary. It will always pass from flange or somewhere. It can exist anywhere. Say flange re thai pare, web re thai pare. Yes or not? D will be answer. Effective width of flange for T-beam is taken as. Effective width of flange for T-beam is taken as. Kete? एबे हमें सॉल्व करिथिलु बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर फार्मूला केते हमें नोच जस्ट से गोटे फार्मूला एरे पचारछि आ किछ नै व्हाट इज दैट सिंगल फार्मूला आ थरे गोटे थरो रिवीजन हे जियो बहुत बढ़िया विड्थ ऑफ फ्लैंज इक्वल टू L0 divided by 6 plus width of web plus 6 times depth of flange. The most economical type of RCC beam. Answer करंतु लॉजिकल क्वेश्चन टा भाबंतु भलसे बुझंतु ट्राई करंतु टू गिव गुड आंसर. मोस्ट इकोनॉमिकल टाइप ऑफ आरसीसी बीम ये सब बीम रु
जो मोस्ट इकोनॉमिकल टाइप ऑफ आरसीसी बीम अछि व्हाट इज दैट? मु जयपुर जाउछि, जयपुर जीवी देखंतु सबुठ फर्स्ट देखंतु एज कंपेयर टू बुझंतु मु ये एनालिसिस करै छी आपन आई हैव मेड एनालिसिस इन क्लास एज कंपेयर टू रेक्टेंगुलर बीम T-beam माने फ्लैंज सेक्शन एज कंपेयर टू रेक्टेंगुलर बीम फ्लैंज सेक्शन इज गुड ओके गुड माने T sections is good clear ठीक अछि सबटो फर्स्ट इटा ही गेला तो एबे देखन तो एठी T section गुड माने तो डेफिनेटली रेक्टेंगुलर सेक्शन को हमें इकोनॉमिकल कंसीडर करिवा नै जो जो ऑप्शन रे T अछि ताकू कंसीडर करिवा देखन तो आंसर कोन ही पारे हेले बी ही पारे और डी ही पारे एबे ये बी और डी मझरे कोनटा आंसर हेबो एठी सिंगली रिइंफोर्स्ड अछि एठी डबली रिइंफोर्स्ड अछि तो एबे हमें कोन गोटे क्वेश्चन हमें एमती भी सॉल्व करिथिलु ओके जस्ट अ मिनिट अरे कोरापुट जयपुर भाई राजस्थान जयपुर नहीं जयपुर आमर कोरापुट ओके जयपुर एठी कोरापुट पाखरे तो जो भाई भौनी मान अछंती यू कैन मीट मी सिंगली रिइंफोर्स्ड टी-बीम एंड डबली रिइंफोर्स्ड तो गोटे क्वेश्चन हमें करिथिलु कि डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन इज अनइकोनॉमिकल एज कंपेयर टू सिंगली रिइंफोर्स्ड इन गोटे सेंस अब से गोटे सेंस कोन आइ रे जो रिइंफोर्समेंट हम कंप्रेशन जोन टे प्रोवाइड करू छु आर स्ट्रेसिंग भल से हेई पारुनी स्ट्रेसिंग भल से हेई पारुनी माने ये जो रिइंफोर्समेंट अछि आई रे नॉट एट परमिसिबल स्ट्रेस नॉट एट परमिसिबल stresses आज you go as compared to singly डबली टिक के अनइकोनॉमिकल होउथला बट एबे देखंतु जदी जदी स्ट्रेस रिवर्सल रो कंडीशन आसी होला तो जदी स्ट्रेस रिवर्सल रो कंडीशन आसी होला अंडर सच कंडीशंस आपण कोन करिवे इफ देयर इज ए स्ट्रेस रिवर्सल कंडीशन तो से सब कंडीशंस रे से सब सिचुएशंस रे आपण को डबली सहित ही जीवा पड़िबो तो ये सब कैटेगरी बीम रे जदी मु कहिबी देन डबली रिइंफोर्स्ड टी बीम इज इकोनॉमिकल ठीक अछि बट स्पेसिफिकली ये पॉइंट को पॉइंट आउट करी जदी क्वेश्चन पचारुची ताहेले आपण कहिबे डबली इज अनइकोनॉमिकल एज कंपेयर टू सिंगली बट जदी एमिति क्वेश्चन पचारला देन यू गो विथ डबली बिकॉज़ ये स्ट्रेस रिवर्सल को भी काउंटरैक्ट करि परिबो reversal can be taken care so D will be perfect answer here और जदी स्पेशली ये पॉइंट को पॉइंट आउट करी क्वेश्चन पचाउछि गो विथ डबली इन केस ऑफ अनइकोनॉमिकल ठीक अछि इकोनॉमिकल नेक्स्ट तो D will be answer ये क्वेश्चन इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज ऑफ ए कंटीन्यूअस टी बीम अरे यार तो आंसर हे जाइतिला आउ थरा आसी गला ठीक अछि मु करि दउछि this particular value this is the answer L naught divided by 6 plus BW plus 6 times depth of flange देखि नियंतु गोट थरा फार्मूला रिवीजन हे जिवो गोट थरा सब फार्मूला देखि नियंतु रिवीजन हे जिवो टाइप ऑफ टी बीम और एल बीम आउ इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज गोट थरा रिवीजन करि नियंतु स्क्रीनशॉट नै नियंतु वेरी इंपोर्टेंट टेक स्क्रीनशॉट
very important. Isolated L beam रो, isolated T beam रो, तापरे continuous L beam पाई, continuous T beam पाई. ठीक अच्छी ये फॉर्मूला जाको मिनिमम फॉर्मूला एति की मन रखिथिबे, very important. Take a screenshot. Next, in T-shaped RCC retaining wall अच्छी T shape रो, the main reinforcement in the stem is provided on. जो stem रे main reinforcement हमें provide करिवा, से ठीक कुआडे provide करिवा. AEE रे क्वेश्चन आसीथिला. स्टेम रे ओके जो मेन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करा जीवो को पटे प्रोवाइड करा जीवो तो ये जो टॉपिक अच्छे रिटेनिंग वाल्स ओके आरसीसी रे रिटेनिंग वाल्स हो एबे एठी क्वेश्चन आसला तो मु आपन को दे देबी बट ओएसएससी रे ये सिलेबस नाही ओके ओएसएससी रे नाही बोधे सो इन द इनर फेस इन वन डायरेक्शन ये जिनस मन रखि दिबे मन रखिया किछि नाही आई विल एक्सप्लेन द रिटेनिंग वाल ओके आरसीसी वाल्स बट दरकार नहीं ओएसएससी पाई द मिनिमम beam width for 1 hour fire. The minimum beam width for 1 hour fire exposure is how much? Anyone? It is 200 mm. Option A will be correct. मन रखिए. The minimum beam width for 1 hour fire exposure is 200 mm. The flexural stress at top and bottom of a T section of 30 cm depth are 50 and 150. Neutral axis from the top will be. इटा calculate करो तो. Calculate this one. Very simple. T beam अच्छी this is your T beam. Let's suppose this is your neutral axis at some depth x. Our bending stress distribution diagram बनाइए like this. Total depth is 30 centimeter. ऊपर कौन अच्छे ठीक अच्छे ऑफ स्ट्रेसेस दिया इची ठीक अच्छे. Let's suppose 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर रो एठी 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर. लेट्स सपोज दिस इज योर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस x. तो एटा केते हे जो गुरु 30 माइनस x. सो मु कोन लिखि परिबे 50 डिवाइडेड अपॉन x इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 30 माइनस x. From here calculate the x value from top. Calculate करिया पे कहिछि. Calculate the x value. What is the x value? बहुत बढ़िया 7.5 centimeter from top. A will be answer. ये क्वेश्चन करो तो a simply supported isolated T-beam of 6 meter span shown below is used as walkway. The effective width of flange is
apply the formula ebe ame formula dekhi dilu apply the formula isolated T-beam eta apply the formula isolated T-beam पाई कौन है फॉर्मूला B effective is minimum of 0.5 L naught divided by L naught by B plus 4 plus BW width of web और B ये दुईटार मिनिमम ठीक अच्छे तो फाइंड आउट इट इज 6 मीटर L naught को एज ए 6 मीटर कंसीडर करंतु कंसीडर L naught एज 6 मीटर एंड सॉल्व इट सब डेटा आपन को दिया है छी B रो वैल्यू 1000 जना क्वेश्चन रे दिया है छी देखंतु B माने कोन विड्थ ऑफ द फ्लैंज जो आइसोलेटेड T सेक्शन अछि तार फ्लैंज रो विड्थ BW 300 mm केते आसुची जस्ट ये फार्मूला को यूज करी कैलकुलेट करंतु केते आसुची व्हाट विल बी द आंसर तो ये सब फार्मूला इंपोर्टेंट ओके आइरो छोटे छोटे ये टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस गुडा को आरसीसी रे आसे तो मन रखि दिबे रिवीजन करिवे रिवीजन करिवाटा बहुत इंपोर्टेंट आउ जो भाई भौनी मान को गोटे जगह रे ही सब जिंस दरकार देन क्लास रे जॉइन करिनी दिवाली ऑफर चालू छी दिवाली ऑफर इज रनिंग डाउनलोड द ऐप जॉइन इन द क्लास एंजॉय द क्लास लर्न इट What is the answer? $800 केमती आसलो गुरु 800 केमती आसला देखो तो टिके 0.5 गुना 6000 डिवाइडेड बाय 6000 by 4 सॉरी 6000 by 1000 प्लस 4 प्लस 300 मोर तो आवरी किछि आसुछि नौ सौ सॉरी 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 ये 0.5 है ना भाई ओके 0.5 है ना 0.5 है एल पाई ओके मुझा का भावुली कौन हो गला सॉरी 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 एठू कैलकुलेट करिवे 0.5 है ना ओके ओनली एल नॉट एठू कैलकुलेट करिवे अरे मोर मुंड काम दउनी 900 mm b इक्वल टू 1000 तो ये दुईटार मिनिमम सो इट विल बी 900 mm 900 कार आसला बहुत बढ़िया 900 mm
0.5 हेबनी ओके मु फार्मूला रे भूल कर देइथिली 0.5 हेबो आपन रो का पई L पई ओके L सेक्शन पई for T section it will be L naught L section पई 0.5 एमिति देखंतु दुईटा फार्मूला रिवीजन करि देली the side face reinforcement is required in T beam will be एटा तो हे जाइथिला 0.1% of wave area ओके 0.1% of wave area ये क्वेश्चन ऑलरेडी हे जाइथिला एटा करंतु the effective depth of T beam for heavy load is taken as anyone the effective depth of T beam for heavy load is taken as generally it is taken as 1/10 of the span मन रखि दिबे 1/10 of the span for heavy loads माने L/D ratio ओके L/D ratio केते 10 the overall depth of a simply supported T beam is usually assumed जो general assumptions हमें नौचु केते नौचु for simply supported T beam तो इटा हमें नौचु 1/12 to 1/15 of the span ठीक अछि for simply support for simply इटा गुटे जनरल assumptions ठीक अछि आ for continuous पाई जो हमें assumptions नेबा it is 1/10 to 1/12 of span तो ये डेटा गुटे मन रखि थिबे दिस इज फॉर कंटीन्यूअस आ ये डेटा होची अपन रो सिंपली सपोर्टेड ठीक अछि सो आंसर विल बी बी स्क्रीनशॉट नै नियंतु टेक स्क्रीनशॉट नै नियंतु मन रखिबे स्क्रीनशॉट नियंतु नेक्स्ट क्वेश्चन करंतु ए शॉर्ट स्क्वायर कॉलम विथ साइड 200 mm is subjected to a design load of 300 kilonewton is subjected to a design load of 300 kilonewton if grade of concrete is M20 and the grade of steel is Fe415 then the area of longitudinal steel required for the section in the limit state design will be area of longitudinal steel required kete एरिया ऑफ कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट कैलकुलेट करिया पय कहूछ कैलकुलेट करंतु लाइक कर देबे भाई भौनी माने ठीक के भल लागिवो दिवाली ऑफर अछि जो भाई भौनी माने क्लास देखिबा को चाहू छंती कंप्लीट जॉइन करंतु कांसेप्ट डिकोडर ऐप डाउनलोड करंतु जॉइन करंतु दिवाली एंजॉय करंतु मस्त बम भी फुटांतु समझते ये बम जाकर रेट केते देखो मु गली बाण किनिया पे ओके बम किनिया पे ये क्वेश्चन सॉल्व करंतु स्टोरी गुडे कहूची बम्स किनिया पे गली माने दिवाली पे ओके नॉट फॉर एनीथिंग एल्स तो राती 11टा क्लास रो गल्ला बेले ओके मु किनिया पे सेठी गाड़ी लगैले देखली अच्छा स्टॉल लगा हिची तो पचारली मु केते कोन केमती सो कोई नहीं आज्ञा आपन को ना प्रिंट रेट जो भी अच्छी से प्रिंट रेट रू 80% डिस्काउंट रे हमें दे देबू मु खुशी एकदम पूरा घरे फोन कर देली छोट भाई फोन कर देली बापा फोन कर देली ए समस्त आसी जानतु आसी गले तांके प्रिंट रेट रे 80% डिस्काउंट पूरा हैप्पी दिल खुश एकदम एबे मु जस्ट मते एमती नॉर्मल से छुरछुरी कुंफी गुडा को ओके रॉकेट गुडे दुईटा एमती जाको जिंस गुडा को दरकार थिला एमती बम फम तो फुटेबु नै ओके बट कुंफी ये सब टिके घर आगे छाड़ले सुंदर लागुछि देखा जाउछि फुल झड़ी ऐसा नॉट ये सब तो मु ता कहले रे गोटे कुंफी पैकेट देला भाई से देला से कुंफी पैकेट रे 6 टाका कुंफी अछि एते एडगी साइज रो ओके 6 टा कुंफी अछि तार प्रिंट रेट केते अछि 4000 टंका एबे से भाबंतु 4000 टंका तार प्रिंट रेट अछि तो मते 80% डिस्काउंट जदी से दबो लेट्स केते रे देला से 3200 टंका गला लेट्स सपोज माने 3200 हटै करी 800 टंका रे से 6 टा कुंफी मु किनि को रानी
लेट्स सपोज एमती दुई तीन टा पैकेट नहीं गली 3-4 टका याड आका पड़ेला बुझी पारछंती ओके पूरा लुटू छंती भाबुछंती गोटे दिन रे मु करोड़पति हे जी बोली सुनंतु सॉल्व करिया कॉलम ऊपर डिजाइन लोड ऑलरेडी दिया हिची डिजाइन लोड केते 300 किलो न्यूटन M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट Fe415 क्लियर Fe415 नाउ जो हम पाखरे फार्मूला अछि अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम 0.4 FCK into area of concrete plus 0.67 FY into area of compression steel ASC तो ये फॉर्मूला रेटा पुट करंतु 3000 into 10 to the power 3 equal to 0.4 into 20 area of concrete केते सेक्शन साइज केते दिया हितला भाई व्हाट इज द एरिया ऑफ कंक्रीट सेक्शन साइज केते दिया हितला 200 into 200 तो 200 into 200 आई रो हमें कौन सब्ट्रैक्ट कर दवा एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील देन आई विल गेट द एरिया ऑफ कंक्रीट ठीक अछि प्लस 0.67 into FY कहते 415 into एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील सॉरी ASC एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील सो आई रो आपण कैलकुलेट करंतु एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इक्वेशन कैलकुलेट एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील केते आसुची मते कमेंट करंतु सबुट फर्स्ट हाउ मच दिस वैल्यू इज कमिंग ये वैल्यू केते आसुची मते कोन हाउ मच दिस वैल्यू इज कमिंग कोहंतु गुरु आंसर आसीची आंसर बी आसीची बहुत बढ़िया जो भाई भौनी माने सॉल्व करिसंती क्वेश्चन को तांके प्लीज कमेंट करंतु कि ये वैल्यू केते आसुची फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इक्वेशन बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन बिल्कुल फ्रॉम दिस इक्वेशन ये इक्वेशन रो देखंतु केते आसुची कोहंतु तो को भाई लाज करंतु नाही जेतकी आसुची एग्जैक्ट वैल्यू कहि दियंतु टिके कैलकुलेटर मारो गुरु कैलकुलेटर मारो एटा टिके लेंदी क्वेश्चन कैलकुलेटर चळे लेबे किछि प्रॉब्लम नाही मारंतु कैलकुलेटर मारंतु हो मुई आका करूछ तो ये मल्टीप्लाई हे जीवो तो इटा आसी जीवो 32000 ठीक अछि तापरे कोन रहिला तापरे तक ब्रैकेट ओपन करिया जदि तो ये जिंसटा रहिबो आपन रो माइनस 0.4 into 20 plus 0.67 into 415 ठीक अछि तो देखंतु 3 करूची सॉल्व 32000 plus 0 plus 270.05 ASC ठीक अछि तो एबे देखंतु 300 into 10 to the power 3 minus 32000 divided by 270.05 देखो area of compression steel by using this particular equation is coming as minus 74.06 mm square माने स्टील माइनस रे आसुची स्टील माइनस रे आसुची स्टील इज कमिंग इन माइनस आ माने कोन माइनस रे किछि स्टील हमें प्रोवाइड करिया कि नो नेवर केबे नाही माइनस स्टील इक्वेशन रो आसुची माने आर किछि मीनिंग नाही सो ये केसेस रे आपण कोन करिवे
अभी तो हम कंप्रेशन मेंबर डिजाइन करू छु ऐसा नॉट वी आर प्रोवाइडिंग तो मिनिमम स्टील प्रोवाइड करी छाड़ी दियंतु मिनिमम स्टील अभी ये मिनिमम स्टील केते कंप्रेशन मेंबर रे 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया अभी ये 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया माने कौन 0.8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 200 गुना 200 केते आसी होला एटा इट विल बी कमिंग डायरेक्टली एज 320 mm स्क्वायर एटा होची आंसर सो बी विल बी आंसर बहुत बढ़िया गेटिंग द पॉइंट एमती आसीओ 320 लाइक दिस ओके हमें कैलकुलेट करू एटा नेगेटिव राशि होला व्हिच हैज नो सिग्निफिकेंस नो मीनिंग सो प्रोवाइड मिनिमम स्टील सो बी विल बी आंसर देखि नियंतु केमती सॉल्व होउची देखि नियंतु नेक्स्ट आपको क्वेश्चन 1 भावंतु आपको क्वेश्चन 2 भावंतु as per IS 456 the main reinforcement in a column should not be less than minimum steel केते एबे हमें देखि दिलु minimum spacing केते तापर spacing of longitudinal bar measured along the periphery of column shall not exceed how much दुईटा प्रोविजन कमेंट करंतु कमेंट देखुची मु नो कमेंट्स येट मिनिमम स्टील 0.8% सेकंड प्रोविजन जो फेरीफेरी रे आपण रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करिवे तार स्पेसिंग इट स्पेसिंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन 300 mm these are the codal provisions okay मन रखी चलंतु नेक्स्ट कैलकुलेट दी पिच ऑफ लैटरल टाइस रे स्पेसिंग पिच माने स्पेसिंग लैटरल टाइस रे स्पेसिंग फॉर ए कॉलम ऑफ 300 mm स्क्वायर विथ 20 mm डायल लॉन्गिट्यूडिनल बार एंड 8 mm डायल लैटरल टाइस आंसर करंतु लैटरल टाइस पिच ऑफ लैटरल टाइस केते आसीओ स्पेसिंग ऑफ लैटरल टाइस बहुत बढ़िया केमती कैलकुलेट करिवा देखो तो स्पेसिंग ऑफ लैटरल टाइस तापर स्पाइरल रिइंफोर्समेंट डायमीटर ऑफ स्पाइरल रिइंफोर्समेंट ये सब जिन मन रखते एठी कॉलम रे प्रोविजंस गुडा को स्पेसिंग मिनिमम ऑफ फर्स्ट लीस्ट लैटरल डायमेंशन लीस्ट लैटरल डायमेंशन सेकंड 16 टाइम्स डाया ऑफ स्टीरअप ठीक अच्छे स्टीरअप नहीं 16 टाइम्स डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्टील थर्ड तापर कौन 300 mm 300 mm ये तीनटा रो कैलकुलेट करिवा आई रो मिनिमम तो लीस्ट लैटरल डायमेंशन केते 300 mm थर्ड पॉइंट तो 300 mm 16 5 केते 16 into 20 32 320 mm सो ये तीनटा रो मिनिमम कौन 300 mm आंसर कौन 300 mm सी विल बी आंसर बहुत बढ़िया देखि नियंतु ये टाइप है बार सॉल्यूशन सी विल बी आंसर अब बेसी ना 10टा क्वेश्चन अछि सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 450 mm ठीक
the maximum vertical reinforcement used in reinforced wall सुनंतु reinforced wall कथा पचाउछि RCC wall कथा पचाउछि ठीक अछि माने retaining wall ये सब not exceed x times the wall thickness okay maximum केते spacing हबो vertical reinforcement रो 450 mm clear maximum spacing is 450 mm इडा गुडे तापर आउ को प्रोविजंस अछि should not exceed x times the wall thickness केते times the wall thickness so देखो तो 3 times the wall thickness t or 450 mm ठीक अछि 3 times the wall thickness or 450 mm I will lesser value so answer will be D here factor x is your 3 it RCC wall रो questions RCC wall रो मु देइथली कोडल प्रोविजंस बोधे आपण मान समस्त को ताइ थिबो ओके RCC wall रो कोडल प्रोविजंस रे ये सब जिंस थिबो effective length of so D will be answer okay D will be answer 3 effective length of column whose one end fixed देखो तो effective length वाला आइला one end is fixed and other end is free compression member रे effective length ऊपर क्वेश्चन पचारिबे one end is fixed and other end is free तार effective length कहते equal to overall length less than overall length greater than overall length less than or equal to overall length the effective length will be 2 times L cantilever ना गोटे fixed other free effective length L effective 2 times L so greater than overall length C will be yes C will be answer ठीक अछि effective length ऊपर क्वेश्चंस गुडा आसीबो the foundation which consists of a thick reinforced cement slab covering whole area to support heavy concentrated structural load is known as slab with touch okay the foundation consists of a thick reinforced cement slab covering whole area empty foundation को हमें कौन कहवा raft footing okay empty foundations को हमें कौन कहवा raft footing जते बेले soil रो bearing capacity बहुत कम थिवो under such conditions we can use this type of footing which is called as raft footing in RCC column if A equal to अच्छा area of steel AS माने area of steel equal to 1000 mm square area of concrete equal to एतिकी stress 5 Newton per mm square stress in compression modular ratio equal to 20 then load on the column is सीधा सीधा केमती कैलकुलेट करिवे आपन को स्ट्रेस इन कंक्रीट दिया आइची देखंतु वर्किंग स्ट्रेस मेथड रो बेसिक कांसेप्ट ओके और लिमिट स्टेट मेथड भी मु आपन को बताई छी ये कांसेप्ट ता लोड ऑन द कॉलम विल बी देखंतु stress in concrete area of concrete plus stress on steel into area of steel तो stress in concrete दिया आइची तो stress in steel केते हेबो modular ratio into stress in concrete means it will be 25 नहीं modular ratio 20 तो 20 into 5 100 20 into 5 it will be 100 Newton per mm square ठीक अच्छी बाकी सब डेटा अपन को एठी दिया आइची तो लोड किलो न्यूटन रे तो देखंतु स्ट्रेस इन कंक्रीट 5 into एरिया ऑफ कंक्रीट 10000 प्लस 100 into 1000 ठीक अच्छी डिवाइडेड बाय 10 to the power 6 अच्छा ये न्यूटन राशियो ओके दिस आंसर विल बी कमिंग इन न्यूटन तो डिवाइडेड बाय 10 to the power 3 so divide करिवे what will be the answer 150 किलो न्यूटन सीधा सीधा आपण पाइबे 150 किलो न्यूटन like this C will be answer here देखिए like this ये type C will be answer A compression member has center to center length of 5 meter. It is fixed at one end. गोटे end रे fix अच्छी आ गोटे end रे hinge support अच्छी
effective length और ये center to center support distance is 5 meter. तो L effective will be equal to how much? 0.8 times L unsupported. तो 0.8 into 5 तो कहते हैं जो 0.8 into 5 it will be 4 meter. It will be 4 meter. So answer will be A, 4 meter. 4 meter will be the answer. An axially loaded column is of 450 into 450 mm size. The effective length of the column is 5 meter. ठीक. What is the minimum eccentricity? E minimum. E minimum. E minimum आपण केमती कैलकुलेट करिवे? How to calculate the E minimum value? देखो तो E minimum equal to maximum of L upon 500 plus B or D divided by 30 or 20 mm. I रो maximum तो 450 तो L इक्वल टू कितने 5 मीटर दिया है 5 into 10 to the power 3 divided by 500 clear 500 plus 450 divided by 30 so ये वैल्यू कितने असला 25 mm और 20 रो मैक्सिमम सो आंसर कितने मैक्सिमम वैल्यू हमको सेलेक्ट करिया रछि फॉर ई मिनिमम इट विल बी 25 mm maximum of 20 or 25 clear 25 mm answer will be 25 mm E minimum equal to maximum of these values so 25 mm next which of the following statement is are correct column base transmit the column load to the column foundation column load is spread over a large area of concrete loaded columns are supported on column basis आई को statement correct हबो मते तो लागु छी सब गुडा को स्टेटमेंट करेक्ट अछि ऑल द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट डी विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जल्दी करू छी टिके क्लास सरे दबा ओके आज टिके भलो लागुनी गाइस टिके क्लास सरे दबा पिला मान भी पढौ छंती जनरली इन ए कॉलम बेस द शियर रेजिस्टेंस एट द प्रॉपर कांटेक्ट सरफेस शियर रेजिस्टेंस एट द प्रॉपर कांटेक्ट सरफेस बिटवीन steel base and concrete may be calculated using a friction coefficient of केते माने ये bearing resistance जो अछि ना तार वैल्यू पचारछि तो से bearing resistance जनरली हमें केते कंसीडर करू छु कंक्रीट और स्टील बेसिस ऊपर it is your 0.45 this is your friction coefficient मन रखिबे not bearing resistance sorry it is asking about friction between concrete and steel तो जो हमें फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कंसीडर करिवा जो नॉर्मल फोर्स आसुथबो नॉर्मल फोर्स सहित 0.45 मल्टीप्लाई करिवा यू विल गेट द फोर्स इन लैटरल डायरेक्शन ठीक अछि ओके सो 0.45 इज द फ्रिक्शनल कोफिशिएंट बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील मन रखि दिबे 0.45 the minimum area of steel in mm square has to be provided in a column of size 250 into 600 mm 0.8 divided by 100 into 600 into 250 1200 mm square A will be answer simple which one of the following set of value give the minimum clear अच्छा minimum clear cover in mm for the main reinforcement in slab beam column and footing minimum clear cover values I को set ta correct which set is correct
15, 25, 40 and 75 option according to this particular code. So option C will be correct. Mano rakhi dibe. Okay, 15, 25, 40 and 75. Next ago question 1 bhavantu, ago question 2 bhavantu. The minimum size of reinforcement in RCC column kete? The minimum thickness of RCC footing resting on soil is given by minimum thickness और minimum size of reinforcement. तो देखो minimum size of reinforcement in RCC column is 12 mm. R2 बेसी size रखम तो R2 कम नहीं. And ये जो depth अच्छी, ये depth कितने है वो? This particular depth will be 150 mm. Okay, ये depth कितने है जो गुरु? This particular depth will be your 150 mm. Clear? 150 mm. Option A. So D and A. D are A. अब पाइल कैप ऊपर जदि रहिला, जदि पाइल कैप ऊपर रहिबा तो जदि पाइल कैप ऊपर रहिला केते? $300 mm. ओके, पाइल ऊपर जदि रहिबो 300 mm. The diameter of lateral ties in a column is taken as lateral ties रो diameter आपण केते कंसीडर करिवे in columns. Lateral ties रो diameter आपण केते कंसीडर करिवे in columns. Lateral ties रो diameter greater of 1/4 diameter of the largest longitudinal bar or 6 mm. ये दुईटा रो maximum. That is diameter of ties phi will be greater than equal to maximum of phi max longitudinal divided by 4 or 6 mm. तापर आर स्पेसिंग ऊपर तो आमे देखि रही जिंस गुडा को. ओके, लिस्ट लैटरल डायमेंशन. अच्छा, आ गोटे जिंस जतबेला आमे स्पेसिंग कैलकुलेट करूथुलु ना, एठी अबे टिके पूर्वर गोटे क्वेश्चन रे स्पेसिंग कैलकुलेट करिथिलु. जस्ट ए मिनिट, वाडे गला से क्वेश्चन टा, टिके गोटे मिनिट भाई, गोटे मिनिट. हाँ, एठी देखन तो लैटरल टाइप्स रो आमे स्पेसिंग कैलकुलेट करिलु. तो ये स्पेसिंग कैलकुलेट करिला बेले लेट्स सपोज जो कॉलम अछि सेठी अनइक्वल डायमीटर ऑफ बार्स प्रोवाइड करा जाय छी. तो इन कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिंग जो हमें कंसीडर करिया फाई ना, फाई लॉन्गिट्यूडनल मिनिमम डाया कंसीडर करिवा इन स्पेसिंग कैलकुलेशन. ठीक अछि, इन स्पेसिंग कैलकुलेशन मिनिमम डाया कंसीडर हेबो. आ जते बडा आपण इडा कैलकुलेट करूछंती डायमीटर ऑफ लैटरल टाइज. Okay, while calculating diameter of lateral ties, तो maximum dia of longitudinal steel एमिति. ओके, सो ये पॉइंट मन रखि देबे, नले एग्जाम रे भूल हेई पारे. ठीक अछि, ये छोटा छोटा जिंस गुडा को a 300 into 300 mm RC column is reinforced with 8 bars. 8टा बार अछि, 4 bar of 12 mm and 4 bar of 10 mm. The diameter of lateral ties is 6 mm. The pitch of lateral ties, देखो तो स्पेसिंग कथा पचारला. तो स्पेसिंग मिनिमम ऑफ लीस्ट lateral dimension तो 300 mm. Second, 16 times diameter of minimum कहते 10 mm longitudinal steel. अच्छा, ये longitudinal steel 10 mm दिया ही जी हो,
into 10 means 160 mm. Okay, it will be 160 mm. अब थर्ड पॉइंट कौन थिला 300 mm. ये तीनटा रू मिनिमम. So what is the minimum and what will be the answer? So obviously the minimum will be 160 and answer is your 160 mm. Clear? What is the answer? Answer will be your 160 mm. C will be answer. आसुची समस्तर बहुत बढ़िया अमित भाई एंड एवरीवन बहुत बढ़िया ठीक अच्छे एठी देखंतु 12 mm आउट 10 mm बोथ दिया ही थिला बट आई हैव कंसीडर द मिनिमम वन ठीक अच्छे एमती. So thank you very much. Thank you for attending the classes. जय जगन्नाथ भाई भौणी माने टेक केयर. नेक्स्ट क्लास रे मिसिवा आज एतिकी ही क्वेश्चन आनी थिली. नेक्स्ट क्लास रे आउरी जो क्वेश्चंस गुडा को बाकी अछि माने इन आरसीसी आउ 3-4टा क्लास करिवा जाय रे नेक्स्ट क्लास रे कंप्रेशन मेंबर ऊपर आउरी क्वेश्चन मु डिस्कस करिवि ठीक अछि. ऑन कंप्रेशन मेंबर फुटिंग रो क्वेश्चंस गुडा को डिस्कस करिवा. फुटिंग्स रो दरकार पड़ले स्लैब रो भी आउ किछि क्वेश्चंस मु आउरी डिस्कस करिवि. स्लैब रो ठीक अछि एबे डिस्कस करि चलथिबि. स्लैब रो ये तीनटा तो आउरी रिगरस वे रे आबे डिस्कशन करिवा ये तीनटा टॉपिक ऊपर. तापरे प्री स्ट्रेस कंक्रीट उठे अछि देखन प्री स्ट्रेस कंक्रीट. ओके भावंतु ये तीनटा टॉपिक ऊपर आउरी माने कम से कम 100-300 क्वेश्चन आउरी डिस्कस करिया पाखा पाखी एज्यूम करंतु. प्री स्ट्रेस कंक्रीट ऊपर भी एटलीस्ट वी हैव टू डिस्कस 100 approximately 100 questions covering every corner of the subject. Okay, then your preparation of RCC MCQ will be complete. ठीक अछि. So जो भाई ये सब क्लासेस तो अच्छी लाइव रहिवो तो देखि नियंतु पर मु रिमूव कर देबी. ओके इट विल बी ओनली अवेलेबल इन पेड बैचेस. आउ जो भाई भौणी माने जॉइन करिया को चाहउछंती यू कैन जॉइन अस. डाउनलोड कॉन्सेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन टेक्निकल नॉन टेक्निकल क्लास नोट्स गुडा को सब जिन सब प्रोवाइड करी. ओके डाउट सॉल्विंग सेशंस 50% ऑफर इज रनिंग इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज. थैंक यू वेरी मच. जय जगन्नाथ भाई भौणी माने टेक केयर.